Yes, we are going to learn a new lesson in English grammar. Okay, so this before starting the lesson, I would like to say you that this you have studied in your first standard also, and you know it. You know it also. Okay, but in deep we are going to learn it today. Okay, so the name of our lesson is singular and plural. Okay, the name of our lesson is singular and plural. So first we will see what is the meaning of singular and what is the meaning of plural, and then we will see how we have to use it in our sentence or in our words. Okay, so nouns, singular and plural, both are nouns. As you have studied, nouns are name of a person, place, animal and thing. Okay, so singular means one. If there is any one thing, we call it as singular. And plural means more than one. That is, if there are more than one things, there are many things, more than one, एक से ज़्यादा, more than one, if there are any things, we call it as plural. Okay, so singular means one thing. Like for example, here it is given book, so one book is given, that is singular. And here in plural column you can see many books, so it is plural. Okay, so book and books, it becomes as singular and plural. So singular means one thing and plurals means more than one things. Okay, now we'll see uh, what is the proper definition of singular noun. A noun which is one in number is called as singular noun. So if it is one in number, like you can see in the picture one girl, so girl is a singular noun. One book, book is a singular noun. So if there are one thing, we call it as singular. Okay, now plural is the plural noun which are more than one in number is called as plural noun. So you can see in the picture there are two girls, means more than one girl, so they are girls. So we put as s in the word. So there are many girls, so we call it as girls, we add s. And there are many books, we call it as books. Okay, so when there are more than one thing, we call it as plural things. Okay, so you understood what is singular and plural. Okay, now there are some rules. Okay, rules for changing the noun from singular to plural. Now you have to change the noun from singular form into plural form. So there are some rules, okay, to do it. So first rule is by adding s. So in the first singular to plural, we add s, means if one thing is given, we add s, it becomes many things. So the first rule is by adding s. So there is one pencil, and in the second one, plural form, there are pencils. So pencil के आगे what we have written, s, so it becomes singular to plural. Okay, now here you can see there is one bag. So in plural form, what it becomes as, bags. What it becomes as, bags. So singular means one bag and plural means many bags. Okay, so we add s. Now second rule is by adding es. So the noun which end with o, s, x, ch and sh. So जो भी noun के आगे end में o होता है, s होता है, x होता है, ch होता है या sh होता है, we convert it into as es. हम लोग उनके आगे प्यूरल फॉर्म बनाने के लिए, टू मेक इट प्यूरल फॉर्म, वी एड es. लाइक हीरो, फर्स्ट यू कैन सी द एग्जांपल हीरो. सो एंडिंग में क्या आया, o. सो o, when the word end with o, we add it as प्यूरल बनाने के लिए, we add it as es. heroes, o आया एंड में, we and it as es, heroes, heroes. Second you can see glass, glass, glass. Glass means one single glass, and if there are many glass, we add glasses, we say it as glasses, GLASS, and we add it as es, glasses. Third you can see box, it ends with x, right? So if it ends with x, we add it as ex,
es in the plural form, like box. Box means one box, and if there are many boxes, we add it as boxes, boxes, boxes. Okay, next is match. So if there is one match, we write match, and if there are many matches, we write is as matches, matches, matches. Okay, brush, brush, एंड में क्या है sh, so we add it as es, brushes. so our second rule is by adding es. तो जहाँ भी एंड में o s x c h और sh आता है, हम लोग प्यूरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के टाइम वी राइट इट एज es. ओके, now our third rule is by replacing y with es. means अगर हमारे सिंगुलर फॉर्म में y आया, so while writing into plural form, y हटा के we write it as ies. like you can see one example, baby, there is one baby, and if there are many baby, we call it as babies, babies. y हटा के what we write is as ies. second, you can see the example lady. if there is one lady, we write it as lady, y से एंड हुआ है, तो y से एंड हुआ है तो उसका प्यूरल फॉर्म में व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव y एंड वी विल राइट ies, दैट इज ladies, ladies. ओके, इफ देयर इज वोवेल बिफोर y, पुट s टू मेक इट प्यूरल. अब सिर्फ y होगा तो हम लोग ने क्या लगाया ies, लेकिन y के आगे अगर वोवल होगा, वोवल एवरीवन रो राइट, दैट इज AEIOU. तो अगर वोवल होगा, सो व्हाट वी विल राइट इट एज, वी विल पुट इन प्यूरल फॉर्म, वी विल राइट इट एज s. ओके, लाइक कीज. तो एंड में तो y है, मैंने आपको पहला रूल क्या बताया कि y अगर होगा तो वो एड इट एज ies. लेकिन इन सम केसेस व्हाट हैपेंस, y के आगे अगर वोवल है, लाइक y के आगे क्या वोवल है, e इज एन वोवल. सो अगर y के आगे वोवल होगा तो हम लोग उसके आगे क्या ऐड करेंगे, s. वी विल ऐड s इन फ्रंट ऑफ इट. लाइक अगेन यू कैन सी बॉय, y आया तो तुम लोग सोचोगे y आया मीन्स वी हैव टू राइट ies, बट y के आगे क्या है, वोवल है. क्या है, वोवल, वोवल दैट इज o इज द vowel. So if o is the vowel, we will write s in the plural form. Understood? Now our fourth rule is by replacing f for fe, that is with ves. अगर हमारे सिंगुलर फॉर्म में f होगा एंड में, या f e होगा एंड में, हम लोग उसको सिंगुलर बनाने, प्यूरल बनाने के टाइम वी विल राइट इट एज ves. f e या f के जगह पे हम लोग क्या प्यूरल में यूज़ करेंगे, ves यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे, ves, f और f e के बदले. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल दैट इज वाइफ. वाइफ में मीन्स वन वाइफ, एक वाइफ हम लोग बोलते, सिंगुलर में वाइफ, वन वाइफ. एंड इफ यू विल से देयर आर मेनी वाइफ, सो वी विल से वाइव्स. दैट विल fe के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, wi विल बी सेम, बट fe के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, ves, वाइव्स. लीफ, एंड में क्या आया, f आया तो f के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, ves. lea सेम रहेगा और f को हम लोग चेंज करके क्या लगाएंगे, ves. अंडरस्टूड? लीव्स, लाइफ, life, लाइफ. तो लाइफ एंड में क्या आया, fe, तो fe को हम लोग चेंज करके क्या लगाएंगे, ves, लाइव्स. थीफ, लास्ट में क्या आया, f, राइट. तो f we will change it and we will write it as ves. thie will be same and f we will replace and we will write it as ves, thieves. Understood? Now there are some words which changes into different form. This you have to remember. There are some words like mouse, we call it as mice. Foot, that is one foot, एक लेग को या एक फुट को we call it as foot, but both we call it as feet. एक ox होगा we call it as ox and the rest we will call it as oxen. If one is the child we will call child, if many are there we will call children. One is the woman and another, if there are many we call it woman and if there are many we call it as women. So these are expressions in which words change differently. ये कुछ words हैं जिसमें you have to remember these words in the plural
form. Okay, there are no rule for this, you have to remember this. तो some nouns है दिस सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल. अब कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी सेम होते हैं. हम लोग उनको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर नाउन्स. क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर नाउन्स. नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल इन यूजुअल वे. लाइक शिप. अगर एक शिप होगा तो भी हम लोग उसको शिप बोलेंगे. अगर बहुत सारे शिप होंगे तो भी उनको हम लोग शिप ही बोलेंगे. अगर एक हेयर है, हम लोग एक हेयर की बात करें तो भी हम लोग हेयर ही बोलते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मैनी हेयर वी कॉल इट एज हेयर ओनली. इन द सेम वे डियर, in the same way bison, fish. There are some words which are irregular now, means in singular also they are the same and in plural also they are the same. Understood? Learn and practice. Thank you.